Myself is Mradul Jain, Assistant Professor in Akgec Engineering College. Today we will discuss the propositional logic, what is proposition, what is well-formed formulae, and how we can draw the truth tables. So let's discuss. So the first is, what is proposition? Proposition is any statement that can be the true or the false. Only we have the two choice. If a particular sentence is truth or the false, then we can say it is propositional. For example, suppose I am saying that Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. It is true. If I am saying it rained yesterday, that means it may be the true or the false. So there may be the two possibility that it may be the true or the false. So, and if I am talking, if x is an integer, then x square is always a positive integer, because we know if either it is a positive integer or the negative integer, the square is always positive. So this is also a true statement. So we can say these are the proposition. But there are a lot of statements that for that we cannot say that this is proposition. For example, you can see, please report at 11 AM sharp. So we cannot say that it will be the true or the false. Similarly, what is your name? Because this is the question. This is not the true and false statement. And next is the A is less than 2. A is less than 2. I cannot say that this particular statement will be the true or the false, because we don't have the value of A. Because if the value of A is 3, then I can say 3 is less than 2. So this will be the false. If the value is A is 1, so 1 is less than 2, then it may be the true. So if the value of A is not available, we cannot say that this particular statement will be the true or false. So if you are confirmed that this particular statement may be the true and false, then we can say this is the proposition. Next, you can say propositional variables. In this propositional logic, we have different type of sentences, and these sentences can also be defined in terms of variables. So we are called this variable as the propositional variable. For example, this is suppose there is a sentence, India is in Asia. So we can represent it as in P, and 2 plus 2 equal to 4. We can represent this sentence or this equation by a variable Q. So these are the, so if there is a sentence or the equation or there exists a identity, we can represent it as a sentence. So this sentence is in the form of variable, then this variable is called as propositional variable. अब compound statement क्या चीज है? Suppose there are multiple statements, then we can connect these statements with the help of some operators. There are some operators I will discuss later, but with the help of these operators, we can connect these all sentences. Then these sentences all in a combination is known as the compound sentences. For example, suppose there is a sentence, man is mortal. So this is true. Okay. And there is another sentence, 12 plus 9 equal to 3 minus 2, 12 plus 9 equal to 21, and 3 minus 2 will be the 1. So it returns a false statement. But if I want to connect, although these two sentences are not related to each other, but in propositional logic we can connect these statements together, and we can find and we can conclude what will be the status of the compound sentence. So suppose this is P and this is Q. Okay. And suppose I am connecting these two sentences with the help of AND statement, then we can write as P and Q. We can connect multiple sentences with the help of these operators. I will discuss with later these operators. Okay. So there are different operators I will discuss in this lecture.
there are 5 symbols. First is the not operator, then and, or, implies, and by implies. If this is this sign is known as not operator, and this is known as the negation, and this is the upper, like the upper cap, this is known as the and operator, and we called it as conjunction. That means we are adding multiple propositional variables or the different type of sentences we can connect. So this is known as conjunction. This symbol is used for the or operation, and this is known as disjunction. This arrow sign is known as implies, and we can say it can connect the if and then. We can connect these two sentences with the help of implication, and this is known as the by implication. Both bidirectional arrow, and it is known as bidirectional arrow, and it is used for if and only if, and it is known as biconditional or the equivalence. So I will discuss each and every one by one. First is the negation. It means the opposite of the original statement. If P is the statement, then the negation of P is denoted by negation of P, and read it as it is not the case of P. So if P is true, then negation of P is false, and vice versa. What does it mean? That if there is a sentence or there is a variable P, then it's opposite. This is not the case of, and it will be represented by negation of P. If my sentence is true, then negation of P will be the false, and if my sentence or the propositional logic is false, then the negation of P will be the true. Then means the negation, the opposite. That means if I am saying that that India is, Delhi is a capital of India, this is true statement. And if I am saying what will be the negation of this statement, that means Delhi is not the capital of India. That means we have to include the not anywhere in the sentence. Next is the conjunction. It means combining of two statements with the help of and operator. I have already told you that we are using the cap operator for this purpose. If P and Q are the two statements, then P and Q is a compound statement. I have already told you that in propositional logic we can connect multiple statements with the help of these operators. So it will create a compound statement. So the conjunction of P and Q is true only when both P and Q are true. The definition of conjunction is that you can see in the truth table that there are two sentences or two propositional variables P and Q. So if there are two variables, there will be the four combination. One is true true, true false, false true, and false false. There only these four possible combinations are possible. So we will, whenever we are creating the truth table, we will write all the possible combinations, and we will find out what will be the output in the last. So if I am using the and the condition of what is the conjunction is, if both P and Q are true, only then the output will be the true. So in this case, you can see there is a first combination where P and Q both are the true, then the output is true. In other cases, either one is true, or either P is true or the Q is true, or both are false. In each case, the output will be the false. So important one is कि अगर मेरे पास and conjunction है, if there are two variables or the multiple variables, कितने भी variables हों, I will get only one time true when all the input are true. जब मेरे पास सारे input true हैं, तभी मेरा output true आएगा. Next is disjunction. It means the combination of two statements using or operator. If P and Q are two statements, then P or Q is a compound statement denoted by P or Q. So this is the operator for or,
and referred to as the disjunction, and it is known as disjunction of P and Q. The disjunction of P and Q is true whenever at least one of the two statement is true. अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं, अगर उनमें से एक भी ट्रू है तो मेरा आउटपुट जो है वो कैसा आएगा, वो ट्रू आएगा. अब हम इस ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, ये P और Q दो, सपोज करो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. तो यहां पे देखो कि अगर मेरे पास एक भी ट्रू है, इनपुट में किसी भी कहीं पर भी अगर मेरे पास एक भी ट्रू है तो ये आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज कैसा मिलेगा, फॉल्स. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक इनपुट में एक भी ट्रू है तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ये दिस इज ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स. बट अगर मैं मल्टीपल मेरे पास वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल सेंटेंसेस हैं और एक कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और उन सभी को मैं और से कनेक्ट कर रहा हूं और उनमें दैट मीन्स कि अगर उनमें कभी भी एक सेंटेंस भी अगर मेरे पास ट्रू है तो वो फाइनल आउटपुट मुझे क्या देगा, वो ट्रू देगा. ये दिस टेबल ओनली फॉर द 2 वेरिएबल्स. बट अगर मेरे पास n वेरिएबल्स भी हैं तो मुझे क्या चीज चेक करनी है कि अगर एक भी इनपुट मेरे पास ट्रू है तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. जबकि और में क्या है, जब मेरे पास सारे इनपुट ट्रू होते हैं तब मुझे ट्रू मिलता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. Next is the implication. Implication means if then. In the if we will check the condition, then will be the second statement, then what it will imply. So in this case only there is a one case when P is true and Q is false. In this case it provides the false statement. I repeat, only there is a one case when P is, that means the condition is true, okay, and Q is false. In this case only the P implication Q is false, otherwise it is true. Next is the by conditional or by implication. This means P implies Q and Q implies P, because it is both directional. P implies Q and Q implies P. If we will use this truth table, it will provide this result. For memorizing, but just you have to think, if both input is same, if both input is same, the output is true. If both input is true, then the output is true. We have to remember, if both the sentences are true or both the prepositions are true or false, same, in this case the by implication will be true, otherwise it will be the false. What is NAND? NAND means negation of AND, and NAND means negation of AND. So what will be the output of AND? If I will write the negation of AND, it will provide the NAND. For example, P and Q. Suppose P and Q. Okay. What will be the definition of AND? If all the input is true, the output will be the true. आउटपुट विल बी द ट्रू. सो दैट मीन्स ये ट्रू है, ये ट्रू है, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, बाकी सब में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स. ओके, और सब में क्या मिलेगा, और इसका मैंने कर दिया निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q. तो यहां पे ये ट्रू का क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, और ये फॉल्स का ट्रू हो गया. तो दैट मीन्स कि मेरे पास NAND की जो डेफिनेशन है, दिस इज द निगेशन ऑफ जस्ट एंड. ओके, नेक्स्ट इज द NOR. NOR इज जॉइंट डिनायल. इट मीन्स परफॉर्मिंग निगेशन आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ 2 स्टेटमेंट्स यूजिंग OR ऑपरेशन. जो मैंने अभी NAND में बताया था कि एंड का निगेशन है, ठीक है, ऐसे ही NOR जो है वो मेरा और का निगेशन है
किस तरीके से, सपोज करो कि मेरे पास दो प्रोपोजिशन है P और Q और मैं इनका कैलकुलेट कर रहा हूं P और Q। ओके, और की डेफिनेशन क्या है कि अगर मेरे पास एक भी ट्रू है तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो इन दोनों में से ये दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू मिलेगा। इन दोनों में से एक ट्रू है, ये ट्रू मिलेगा। यहां पर एक ट्रू है, ये मुझे ट्रू मिलेगा। और यहां पे एक भी ट्रू नहीं है तो ये फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। और मैंने क्या कहा कि जो नॉर है वो मेरा क्या है, निगेशन ऑफ और, निगेशन ऑफ और। ठीक है, तो अब यहां पे मैं ये निगेशन लेता हूं तो ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स हुआ, ट्रू का निगेशन फॉल्स हुआ, फॉल्स का निगेशन क्या हुआ, ट्रू। तो ये जो है वो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, नॉर का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रूव दैट, इससे पहले हमारे पास एक और है ये एक्स और। एक्स और में क्या चीज है कि यहां पे मेरे पास, अगर मेरे पास दो प्रोपोजिशन है P और Q, ओके, तो यहां पे जब भी जो भी मेरे पास ये टोटल ये आ रहा है आउटपुट, इसमें मुझे क्या करना है कि मेरे पास ट्रू जो है वो हमेशा इवन में होने चाहिए। ट्रू जो है वो हमेशा इवन में होना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं इवन पैरिटी जनरेटर भी कहते हैं हम इसे, और द ट्रू मस्ट बी इवन। तो दैट मीन्स अब यहां पे देखो कि ट्रू ट्रू दो हैं ऑलरेडी। यहां पे ट्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं ट्रू लेता हूं तो ये कितने ट्रू हो जाएंगे, 3। तो दैट मीन्स कि ये पूरी लाइन में जितने यहां पे दो वेरिएबल हो या n वेरिएबल हो, ट्रू जो है वो मेरे हमेशा इवन में रहना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स। यहां पे ट्रू है, यहां पे फॉल्स है। मैंने क्या कहा, ट्रू की पैरिटी बनानी है मुझे। तो यहां पे 1 है तो यहां पे एक और ट्रू अगर मैं ले लेता हूं तो ये इवन हो जाएगा। यहां पे एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो यहां पे भी मैंने क्या लिया, एक ट्रू ले लिया, क्योंकि मुझे ट्रू जो है वो हमेशा इवन में रखना है। और यहां पे फॉल्स है, यहां पे फॉल्स है, अगर मैं ट्रू लेता हूं तो वो ऑड में होगा, तो यहां पे मेरे पास फॉल्स आएगा। ट्रू पैरिटी जनरेटर, ट्रू जो है इंक्लूडिंग आउटपुट मेरे पास हमेशा इवन में होना चाहिए। दिस इज एक्सऑर ऑपरेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मुझे चेक करना है कि ये और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी है ये मुझे सेम रिजल्ट देती है या नहीं देती है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस टोटल जो आइडेंटिटी है इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। मैंने एक्स और वाई लिया और इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उन सबको लिख लिया सीरीज में। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि उसके बाद मुझे चेक करना है कि ये एक्स और वाई का ऑपरेशन क्या होगा। तो मैंने बताया था कि ये क्या है कि मुझे ट्रू जो है वो हमेशा इवन में रखने हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, क्योंकि ट्रू फॉल्स ट्रू इवन हो गया यहां तक आते आते। ठीक है, यहां पर भी इवन रहा ये तीनों को मिलाकर। यहां पे ट्रू को फिर से मैंने इवन कर दिया और ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स और की टेबल को फिल कर लिया। अब मुझे देखना है राइट साइड में। राइट साइड में क्या है, एक्स निगेशन बाई, निगेशन ऑफ एक्स और बाई। तो इसके लिए इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ बाई और निगेशन ऑफ एक्स। निगेशन ऑफ बाई, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू हो गया। निगेशन ऑफ एक्स, ट्रू का यहां पे फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हुआ, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट किया, एक्स एंड निगेशन बाई। एक्स मेरा ये है, निगेशन ऑफ बाई मेरा ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैंने क्या बताया कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंड। एंड में मैंने क्या बताया था, एंड में मैंने बताया था कि जब मेरे सारे पॉजिटिव हैं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ट्रू मिलेगा। तो ये ट्रू है एक्स और ये क्या है, फॉल्स। तो मुझे क्या मिला, फॉल्स। इधर ट्रू मुझे ट्रू मिल गया क्योंकि ये इनपुट में सारे ट्रू हो गए। इधर फॉल्स है तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। और इधर फॉल्स ट्रू है तो भी क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स। तो ये क्या निकल आया मेरा एक्स एंड निगेशन बाई। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, निगेशन ऑफ एक्स एंड बाई। निगेशन ऑफ एक्स मेरा ये है और बाई मेरा ये है। ठीक है, निगेशन ऑफ एक्स एंड बाई। और एंड यहां पर भी ये क्या है, एंड है। और एंड में मैंने क्या बताया था कि अगर सारे मेरे इनपुट पॉजिटिव हैं तो मुझे ट्रू मिलेगा। अब यहां पे देखो, निगेशन एक्स एंड बाई, ये ट्रू फॉल्स है, यहां पे मुझे क्या मिला, फॉल्स। ये फॉल्स है, मुझे क्या मिला, फॉल्स।
ये क्या है, ट्रू ट्रू, सारे इनपुट ट्रू हो गए तो ये क्या मिला मुझे, ट्रू मिल गया। और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू है तो ये मुझे क्या मिल गया, फॉल्स। अब इनके बीच में मुझे क्या लगाना है, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगाना है, और की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक भी ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलेगा। अब देखो इसमें एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू है, ये ट्रू मिल गया मुझे, ये एक ट्रू मिल गया मुझे, ये ट्रू मिल गया मुझे, ये दोनों फॉल्स हैं, ये फॉल्स मिल गया। तो ये देखो अब मुझे क्या चेक करना है, क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी सेम है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और मेरी राइट हैंड साइड सेम है। दैट मीन्स कि दिस आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड दिस आइडेंटिटी विल ऑलवेज वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, P X और Q, P NAND Q is equivalent to P implication Q। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो भी मुझे चीज प्रूव करनी है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे जैसे इसमें 2 हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बनेंगे। ये चारों कॉम्बिनेशन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये 4 कॉम्बिनेशन सीरीज में लिखे मैंने। उसके बाद मैंने ये मैंने XOR का लिखा यहाँ पे कि क्या बनेगी। मैंने बताया था कि ट्रू जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया और यहाँ पे ये ट्रू आ गया, बाकी के ये क्या आएंगे मेरे फॉल्स। इसके बाद मैंने क्या किया कि P नॉर Q, यहां पे देखो मुझे क्या मिलेगा। मैंने क्या बताया कि अगर मेरा ये जो है वो क्या चीज है, निगेशन ऑफ और, तो देखो ये P एंड Q दोनों मेरे ट्रू हैं। यहां पे मुझे अगर मैं इसका और देखूं तो मुझे क्या मिलता है, ये ट्रू मिलता है, लेकिन ये उसका मुझे क्या करना है, निगेशन, तो ये फॉल्स मिला। ट्रू और फॉल्स का ये क्या मिलता, मुझे ट्रू मिलता, तो ये निगेशन कर दिया तो क्या मुझे मिला, फॉल्स और ट्रू का मुझे क्या मिलता, ट्रू मिलता, तो ये मुझे क्या मिला, फॉल्स, निगेशन किया मैंने। और ये फॉल्स एंड फॉल्स का मुझे क्या मिलता, फॉल्स मिलता, उसका निगेशन किया तो ये ट्रू, तो ये मेरा नॉर का आ गया। अब मैंने क्या किया, इन जो मेरे ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों का मुझे क्या करना है, इन दोनों का मुझे और करना है। और मैं क्या कहता है कि अगर मेरा एक भी ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो इन दोनों में देखो एक ट्रू है तो ये मुझे ट्रू मिल गया, इन दोनों में भी एक ट्रू है तो मुझे ये ट्रू मिल गया, इन दोनों में भी एक ट्रू है तो मुझे ट्रू मिल गया, और यहां पे मुझे एक भी ट्रू नहीं मिला तो ये क्या मिल गया, मुझे फॉल्स। ये मेरी एंड की कंडीशन लग गई। अब यहां पे अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये चेक करना है P NAND Q। P NAND मीन्स क्या है, एंड का निगेशन। तो यहां पे क्या है कि दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे ये ट्रू एंड में ये ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। तो वो उसका जब मैंने निगेशन किया तो ये मुझे फॉल्स मिला, और ये सारे क्या मिल गए मुझे, ट्रू। ओके, अब यहां पे देखो कि जो मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों जो हैं वो सेम है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो मेरी इक्वल है कि नहीं, या मैं कहूं कि ये जो आइडेंटिटी है वो मेरे इसके इक्वल है या नहीं। तो अगर मेरी ट्रुथ टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं वो अगर सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ओके, थैंक यू। So what we have learned today, that what is well-formed formulae, what are the different type of operators used, what is the compound statements in propositional logic, and how we can draw the truth table for different type of identities or the equation. Thank you.